So in the last video, we have discussed about profit and loss, and in this video, we will start worksheet number 2. First question. A shopkeeper purchased a pair of shoes for rupees 800 and spent rupees 20 on its box. He sold it at a profit of rupees 80. Find actual CP of shoes, SP of shoes and profit or loss percentage. So यहाँ पर एक शॉपकीपर है जिसने 800 रुपीज़ में एक शूज़ खरीदा है, एंड देन उसने बॉक्सिंग के ऊपर यानी कि पैकेजिंग के ऊपर 20 रुपीज़ खर्च किया है, एंड देन उसने उसको सेल कर दिया है 80 रुपीज़ के प्रॉफिट पे. तो हम लोग को पता लगाना है कि उसका एक्चुअल सीपी क्या था, एसपी क्या है और प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज क्या है. सो हम लोग सबसे पहले गिवन लिख लेंगे. सीपी ऑफ शूज़ इक्वल्स पैकेजिंग चार्जेस or you can write overhead expenses also equals to rupees 20 and profit is also given to us. Profit equals to rupees 80. ओके अब नंबर 1 हम लोग सॉल्व करेंगे. नंबर 1 में हम लोग को एक्चुअल सीपी निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे एक्चुअल सीपी इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ द शूज के प्लस हम लोग ओवरहेड एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे. तो एक्चुअल सीपी कितना बन जाएगा, रुपीज 820. नेक्स्ट क्वेश्चन, एसपी ऑफ शूज. यहाँ पे हम लोग को सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. So SP is equals to CP plus profit. ओके एंड देन हमारा CP है रुपीज़ 820 प्लस हमारा प्रॉफिट कितने रुपीज़ का, 80 रुपीज़ का. सो इनको हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा रुपीज़ 900. ये हमारा SP हो गया. नेक्स्ट हम लोग को प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना है. यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में दिया ही है कि ये प्रॉफिट हो रहा है 80 रुपीज़ का. सो डायरेक्टली हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज को निकाल लेंगे. सो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू प्रॉफिट बाय CP इंटू 100. यहाँ पे फॉर्मूलाज लिखना बहुत नेसेसरी है, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट दी फॉर्मूलाज. सो प्रॉफिट 80 रुपीज़ है, कॉस्ट प्राइस आपका 820 है इंटू 100%. ओके अब हम लोग इसको कट करेंगे. सो 0 0 कट हो गया, 2 4 ज़ा एंड 2 41 ज़ा. सो यहाँ पे क्या आएगा, 4 इंटू 100 दैट इज 400 बाय 41%. दिस इज द रिक्वायर्ड प्रॉफिट परसेंटेज. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 mangoes were purchased at rupees 125 per 100 and sold at a loss of rupees 100. Find the SP of 1 dozen mangoes. तो यहाँ पे हम लोग को बोला गया है कि 400 मैंगोज को परचेज किया गया है 125 पर 100, यानी कि 100 मैंगोज का कॉस्ट है 125. वी विल राइट कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 मैंगोज. नाउ कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 मैंगोज इक्वल्स टू 125 इंटू 4, सो रुपीज 500. नाउ लॉस इज ऑल्सो गिवन टू अस, सो लॉस इज इक्वल्स टू रुपीज 100. सो सेलिंग प्राइस इक्वल्स कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. ओके सो CP माइनस लॉस. तो CP है हमारा 500 माइनस 100. सो यहाँ पे हमारा रुपीज़ 400 है सेलिंग प्राइस और वो 400 मैंगोज का. ओके सो सेलिंग प्राइस ऑफ 400 मैंगोज इज इक्वल्स टू रुपीज़ 400. तो हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, हम लोग को 1 डजन मैंगोज का सेलिंग प्राइस निकालना है. सो हम लोग निकालेंगे SP ऑफ 1 मैंगो. हेयर वी आर यूजिंग यूनिटरी मेथड. 400 बाय 400, ये कॉस्ट प्राइस था, बाय नंबर ऑफ मैंगोज हमने कर दिया. सो ये आ गया आपका रुपीज़ 1. तो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 मैंगोज या फिर 1 डजन मैंगोज, बिकॉज 1 डजन में 12 पीस होते हैं, इसलिए हमने 12 मैंगोज का सेलिंग प्राइस निकालना है. इक्वल्स टू रुपीज़ 1 इंटू 12 दैट इज रुपीज़ 12. एंड लास्ट वी विल राइट द आंसर स्टेटमेंट. देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन मैंगोज is rupees 12. Next question. A man purchased a cell phone for rupees 2000. By paying rupees 200 more, he replaces its body, that is case. If he sells the cell phone for rupees 2500, find his profit or loss percentage. So यहाँ पर एक आदमी ने सेल फोन परचेज किया 2000 रुपीज़ का, एंड देन उसके ओवरहेड एक्सपेंसेस है 200 रुपीज़ का, एंड देन उसने उसको सेल किया है 2500 में. सो हम लोग को उसका प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है. सो वी विल राइट कॉस्ट प्राइस ऑफ सेल फोन इक्वल्स टू रुपीज़ 2000, देन ओवरहेड एक्सपेंसेस equals to rupees 200. Then actual cost price also we will find equals to cost price plus overhead expenses equals to rupees 2200. So ये हमारा cost price है, and then selling price is given to us, so we will write selling price of cell phone is equals to rupees 2500. Now cost price is 2200 and selling price is 2500. Which is more? So of course selling price ज़्यादा है, इसका मतलब हमारा profit हो रहा है. So we will write since SP is more than CP, therefore it is a gain for the man. Now we will find the profit or gain, which is equals to SP minus CP. So 2500 minus 2200 equals to rupees 300. Now we will find the profit percentage. Therefore profit percentage equals to profit by CP into 100. So profit 300 by cost price is 2200
into 100. So double zero cut. 2 11s are 2 150s are. So this will become 150 by 11%, and इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर हमारा आएगा 13.63%. Last we will write the answer statement. Therefore, the profit percentage for man is rupees 13.63%, or 150 by 11% also you can write. Next question. A man buys 5 dozen eggs at rupees 36 per dozen, out of which 5% got broken. He sold the remaining eggs for rupees 48 per dozen. What was his total gain? So यहाँ पर एक आदमी ने 5 डजन एग्स खरीदा है, वो भी 36 रुपीज पर डजन. So we will write number of eggs purchased. So here he has bought 5 dozen, and in 1 dozen there are 12 pieces. So 12 into 5 equals to 60 pieces of eggs he has bought. Okay. Cost price of 1 dozen is rupees 36. So cost price of 5 dozen eggs will become rupees 36 into 5. So 180 rupees. Okay. 5 dozen eggs का cost price हमने निकाल लिया, that is 180 rupees. Now percentage of eggs got broken equals to 5%. So number of eggs broken. So कितने eggs broken हुए हम लोग निकालेंगे 5% of total number of eggs. So 5 by 100 into 60 eggs, there were total 60 eggs. So we will cut it. 0 0, 5 2s are, 3s are. So 3 eggs got broken. So number of eggs left equals to 60 minus 3, that is 57 eggs are left. First we will convert these 57 eggs into dozen. So dozen of eggs left. We will divide the number of eggs by 12. Why 12? Because in 1 dozen there are 12 pieces. So when we will divide it, we will get 4.75. So we have converted it into dozen, and now we will find the selling price. Okay. So selling price of 1 dozen eggs equals to rupees 48. Then SP of 4.75 dozen eggs equals to rupees 48 into 4.75. So it will become rupees 228. And now we are having selling price, that is 228, and the cost price was rupees 108. So cost price is less than selling price. So we are having a gain. So we will write gain is equals to SP minus CP, which is equals to rupees 228 minus 180. That is rupees 48. So he has gained rupees 48. And last but not the least, we will write the answer statement. Therefore, the total gain is rupees 48. So एक बार और हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं. यहाँ पर एक आदमी था जिसने 5 डजन एग्स खरीदा था, वो भी 36 रुपीज़ पर डजन के हिसाब से. तो हमने सबसे पहले नंबर ऑफ एग्स निकाला. एक डजन में 12 एग्स होते हैं. सो हम लोग 5 डजन में कितने एग्स होंगे? 5 into 12, that is 60 eggs. Then cost price of 1 dozen is 36. तो 5 dozen eggs का cost price निकाले हम लोग, that is rupees 180. Okay. 5% of eggs got broken. So हमने 5% निकाला 60 का. कैसे निकाला? 5 by 100 into number of eggs, that is 60. So इसको निकाला तो हमने देखा 3 eggs broken थे, टूट गए थे. Number of eggs left. So हमने 60 minus 3, that is total number of eggs, minus number of eggs broken को subtract किया, तो we got 57 eggs. And then dozen of eggs left. क्योंकि यहाँ पे हम लोग को सेलिंग प्राइस डजन के हिसाब से दिया है, इसीलिए हमने नंबर ऑफ एक्स को डजन ऑफ एक्स में कन्वर्ट कर दिया है. ओके. सो डजन में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ एक्स लेफ्ट बाय 12. बाय 12 क्योंकि एक डजन में 12 पीसेस होते हैं, इसलिए हमने इसको 12 से डिवाइड किया. सो डिवाइड करने पे हमारा 4.75 आया. एंड देन इट वाज गिवन इन द क्वेश्चन दैट SP ऑफ 1 डजन एग्स इज rupees 48. Then we found the SP of 4.75 dozen eggs. We got rupees 228. So our selling price is rupees 228 and our cost price is rupees 180. So our selling price is higher. So we have got a profit or gain. So हमने gain निकाला SP minus CP, that is rupees 228 minus rupees 180. So we got a gain of rupees 48. I hope the question was clear to you, and if there is any doubt you can ask in the comment section. Let's move to the next question. Rahul buys an almirah for rupees 2000 and spends rupees 400 at its transportation charges. If he sells the almirah for rupees 3000, determine the profit or loss percentage. So we will write cost price of almirah, which is equals to rupees 2000. Then you can write transportation charges, or otherwise you can write overhead expenses also. So I am writing overhead expenses. Rupees 400. Now we will find the actual CP. It will become 2000 plus 400. That is rupees 2400 or 2400. Okay. Now it is given to us that he has sold the almirah for rupees 3000. So we will write selling price of almirah, which is equals to rupees 3000. Now selling price is 3000 and cost price is 2400. Which is more? Of course selling price. Yes, he has incurred a profit. So we will write since SP is more than CP, therefore it is a profit. Now we will find the profit. Profit equals to SP minus CP. So SP is 3000 minus 2400. We got 600 rupees. Okay. Now we will find the profit percentage.
First we will write the formula, that is profit by CP into 100. So profit is 600 by cost price is 2400 into 100%. So 0 0 0 0. Okay, and 6 4s are 24, 4 into 25s are 100. So the profit percentage is 25%. And last but not the least, we will write the answer statement. Therefore his profit percentage is 25%. So here ends our worksheet 2, and I hope that all the questions were clear to you. If the video was helpful to you, please hit the like button and share and subscribe to the channel. Thank you.